Hello everyone. Today we will discuss class 10 subject English first flight book and the chapter number 1, A Letter to God, and the writer of this chapter is J.N. Funes. Before starting the chapter, we will discuss something about the theme and the introduction part of the chapter. So here I have written, just you can take a look. A Letter to God describes the unshakable faith in the generosity of God of an innocent man Lencho, who requested God to send the money. It was this unquestionable faith in God, his childlike simplicity helped him to come out of the situation. He also called the post office employees who helped him a bunch of crooks. Okay. So we'll discuss about the chapter A Letter to God. A Letter to God एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल फार्मर है, उसका नाम है लेंचो. Are written in the board. The name of that farmer or the peasant is Lencho, and he worked just like an ox. It has been described also in the part of the chapter. When you will read the chapter, you will take the reading, you will get to know that there is a man whose name is Lencho and he is a farmer and he can work like an ox. Okay, so what happened? There was a disaster or the problem or the difficulty came, and after it, what happened? His all the crops of that very particular year, it totally deteriorated, it totally finished. Then Lencho thought, or it was in his unshakable faith, it was his unshakable faith that I have written over here like this. It was his unshakable faith that he heard somewhere that God always helps the people, those who helps themselves. So he decided that he will write a letter to the God, and he wrote a letter, and after getting when he wrote the letter, he posted it into the mail, but there is no address of the God. The post office employees took that letter, and the postmaster of that village or that town area, he started laughing to watch that particular or a special letter, and he decided with the help of his other employees of his post office that he would help that man who has posted this letter in faith that the God will help him. Okay, so now we will start the chapter. What happened in the end, we will see that. Begin. The house, the only one in the entire valley, set at the crest of the low hill. From the height, one could see the river and the field of the ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, at least a shower throughout the morning. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky sky towards the northeast. Now we are really going to get some water. Women ये उसकी वाइफ है, अपनी पत्नी से कहता है कि अब हमें कुछ पानी मिलने वाला है. यानी उसकी जो फसल थी वो तैयार थी और उसका मकान कहाँ था? एक वैली में था, और उसकी जो मकान था वो लो हिल पर था, और वो वहां से खड़ा होकर अपने पूरे खेत को देख रहा था. एंड ही वाज वेरी हैप्पी. अपनी वाइफ से कहता है बस अब थोड़ी बारिश हो जाए, और बारिश होने से क्या होगा, जो हमारी फसल होगी वो अच्छी हो जाएगी. The woman who was preparing supper कहते हैं रात के खाने को, डिनर को, replied yes, God willing. The older boys were working in the field. बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house. Until the woman called to them, come for dinner. It was during the meal time. ये meal time का समय था, और जो उनकी मदर थी या वुमेन थी, उसने उनको कहा सभी लोग आ जाइए, हम लोग अब खाना खाएंगे. Just as Lencho had predicted, क्योंकि लेंचो की यही प्रेडिक्शन थी, वो चाहता था, देखकर उसे लग भी रहा था आसमान में कि कुछ बारिश होने वाली है, तो वो ये चाह रहा था कि कुछ बारिश हो जाए. और तभी क्या हुआ, उसका जो प्रेडिक्शन था या उसका जो कैलकुलेशन था वो सही हो गया. Big drops of rain began to fall. बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी. In the northeast, huge mountain of clouds could be seen approaching. The air was fresh and the sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of the feeling the rain on his body, and when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pies and the little ones are 5. यानी ऊपर से बूंदें गिर रही थी. अब हम जानते हैं जब बूंदें गिरती हैं तो लोग एंजॉयमेंट के लिए बाहर निकल आते हैं. Same happened here.
यहाँ पर भी ऐसे हुआ। वो बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट पीसेस बोल रहा है और छोटी छोटी को वो लिटिल वंस आर फाइव्स के लिए कह रहा है। उसके बाद में अपने विद a satisfied expression he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boy exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. अब क्या हुआ, अभी वहां पर बूंदें गिर रही थी, suddenly there was a change. चेंज क्या हुआ कि जो हमारी वो बूंदें थी वो हेलस्टॉर्म में बदल गई, यानी ओलावृष्टि में बदल गई। और अब चारों तरफ जहां बारिश हो रही थी हल्की हल्की और जो हमारी खेती के लिए बहुत अच्छी थी, वरदान थी, ब्लेसिंग थी, बूंद था, उनकी जगह ओलों ने ले लिया। और आप समझते हैं जब ओलावृष्टि होती है, हेलस्टॉर्म आता है तो क्या होता है, सारी फसल को बर्बाद कर देता है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। अब उसको बहुत बुरा लगा, ऑब्वियसली किसी को भी खराब लगेगा, तो इस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहा हो अपनी फसल को। आई होप इट पासेस क्विकली, उसने कहा ईश्वर करे जल्दी से खत्म हो जाए, लेकिन वो जल्दी से खत्म नहीं हुई। इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर, कितनी देर तक चलती रही, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउसेस, द गार्डन, द हिलसाइड, द कॉर्नफील्ड, सब एरिया, कौन-कौन से एरिया, गार्डन, हिलसाइड, हाउसेस एंड द कॉर्नफील्ड, सभी जगह वैली में केवल बर्फ ही बर्फ थी। एंड द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, पूरी धरती ऐसी हो गई थी जैसे नमक से उसको कवर्ड कर दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक पत्ती नहीं बची थी पेड़ पर। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स एंड लेंचो's soul was filled with sadness, और लेंचो की आत्मा जो थी वो किससे भर गई, वो दुख से भर गई। क्यों भर गई, क्योंकि उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी। एंड देन he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts, locusts कहते हैं टिड्डी दल को, कहता है कि अगर हमारे यहाँ टिड्डी दल दिया जाता तो भी वो उतनी अनाज छोड़ देता कि हम पूरे साल खा सकते थे, बट वो हेलस्टॉर्म ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। Everything is finished and then what happened? Would have left more than this. The hail has left nothing. This year we'll have no corn. और इस साल हमें कुछ भी कॉर्न नहीं मिलेगा, अनाज नहीं मिलेगा। The night was a sorrowful one. Obviously, night जो थी वो दुख से भरी हुई थी। All our work for nothing. There is no one who can help us. अब कोई नहीं बचा जो हमारी हेल्प करे। We'll go hungry this year. इस साल तो हम भूखे ही मरेंगे। अब देखिए first part has been completed. यहाँ 4 questions दिए हैं। You have to study all these 4 questions and try to correlate with the explanation which I have done for you and try to find out the answer. The first one is what did Lencho hope for? Second is why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lencho's field? And the fourth one is what were Lencho's feeling when the hail stopped? Now we come to the next part. But in the hearts of all who lived in the solitary house in the middle of the family, there was a single hope, help from God. लेकिन solitary means अकेला, lonely. लेकिन वो जो अकेला मकान था उस वैली में, जो लेंचो का ही मकान था, उन सभी के दिलों में, यानी घर वाले जो थे सभी के दिलों में एक होप थी, और वो होप थी ईश्वर की ईश्वर उनकी जरूर मदद करेंगे। And don't be so upset even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. तो घर में बातें चल रही थी और उसमें बातों में एक बात ये भी आई कि कोई भी आदमी भूख से नहीं मरता। That's what they say. No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one conscience. Lencho was an ox of a man. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। An ox of a man. मैंने आपको जब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बता रही थी तब भी मैंने आपको बताया था कि लेंचो कैसा आदमी था। वो सिंपल, वो he was a man of simplicity. I have written in front of you childlike simplicity, and as well as he was a farmer and he could work like an ox. बस वो ऐसा ही आदमी था, इतना ही सिंपल था, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला आदमी वो नहीं था। Then what happened? Next is so Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लेकिन वो थोड़ा लिखाई पढ़ाई जानता था। So the following Sunday, next Sunday at daybreak, then निकला, he began to write a letter which he himself could carry to town and place in the mail. उसने एक लेटर लिखा और मेल में पोस्ट करने के लिए वो चला गया। It was nothing less than a letter to God. वो कुछ नहीं था except इसके कि उसे भगवान को एक पत्र लिखना था। And he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos. Pesos को आप कोरिलेट कर सकते हैं 100 रुपए से, लेकिन ये यहाँ की मनी का नाम दिया गया है pesos. Pesos means currency of several Latin American countries. It has been given over here. Okay, so now then because the hailstorm, उसने बताया कैसे उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई और इस साल उसे 100 pesos चाहिए ताकि वो दोबारा से क्या कर सके, अपने खेत को दोबारा से वो तैयार कर सके नई फसल में।
He wrote to God on the envelope, और envelope पर उसने नाम लिखा एड्रेस की जगह ईश्वर का, यानी to God, and then put the letter inside and still troubled went to town at the post office. He placed the stamp of the letter and dropped it to the mailbox. उसने उसके ऊपर एक स्टैम्प लगाई और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. Never in his career as a postman had he known that address. अब जो पोस्टमैन उन जो एम्प्लॉयज हुआ करते थे वो लेटर्स को क्या करते थे, सेलेक्ट करते थे, उनको पिक करते थे कि भाई ये इस एरिया में जाएगा, वो उस एरिया में जाएगा, वो उस एरिया में जाएगा. तो जैसे ही उसकी निगाह उसके एड्रेस पर गई, उसने देखा अरे ये क्या है, टू गॉड, अब मैं इसे कहाँ भेजूं. तो वो हंसने लगा, वो सोचने लगा कोई इडियट पर्सन है, कोई स्टूपिड पर्सन है जिसने इस तरीके से ये लिखा है. वो उस लेटर को लेकर हंसता हुआ अपने पोस्ट मास्टर के पास गया. उसने पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया. अब देखिए क्या हुआ. द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, पोस्ट मास्टर भी एक फैट आदमी था, यानी मोटा आदमी था, लेकिन वो एमिएबल था. एमिएबल कहते फ्रेंडली को. देन आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन सडनली वो सीरियस हो गया. सीरियस क्यों हो गया? क्योंकि वो भी जानता है अच्छी तरीके से, वी ऑल आर द ह्यूमन बीइंग्स, हम सभी एक दूसरे की साइकोलॉजी को जानते हैं. और बेसिकली जब हम दुख में होते हैं, परेशानियों में होते हैं, तो हम जब दूसरे बंदे को परेशानी में देखते हैं, दूसरे पर्सन को परेशानी में देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी ये क्वेश्चन तुरंत अराइज हो जाता है, यार हमने भी बहुत दुख देखे हैं, हमने भी बहुत परेशानियां देखी हैं. वैसे भी हमारे यहाँ पर हिंदी में एक सूक्ति कही जाती है कि जातन के ना पड़ी बिवाई वो क्या जाने पीर पराई, यानी कि we have to know, या different people have taken that, have tasted the different problems and the sadness and the gloomy and the dejection and the rejection in their life. So that's why every person knows what is the taste of sadness, what is the टेस्ट ऑफ डिफिकल्टीज. तो शायद पोस्ट मास्टर जो था वो भी एक एमिएबल पर्सन था, वो इस चीज को समझ गया और उसने कहा व्हाट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर्स स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. और सोचने लगा काश मैं भगवान की तरफ से पत्राचार करूं. और फिर उसके दिमाग में सब एक प्लान आया और उसने देखिए क्या किया. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए ताकि उस लिखने वाले का विश्वास ईश्वर से न डिगे, उसने क्या किया. द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट नीडेड समथिंग मोर देन goodwill, ink and paper, but he stuck to the resolution. Resolution कहते हैं firm determination को. He asked money from his employees, and himself give the part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो जैसे ही लेटर खोला, क्योंकि हम तो जानते हैं कि लेंचो ने क्या लिखा था, लेंचो ने 100 पीस मांगे थे, तो वो तो सोच रहा था शायद लेटर का आंसर लेटर से ही देना पड़ेगा. बट हुआ क्या, वहां पर 100 पीस मांगे गए थे. तो हमारे पोस्ट ऑफिसर था, यानी कि जो हमारा पोस्ट मास्टर था, वो मास्टर थे, उन्होंने ये सोचा कि मैं इसकी हेल्प करूंगा. और उन्होंने क्या किया, अपनी सैलरी से और बाकी अपने जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरी से पैसा लिया, अपने कुछ नियर और डियर फ्रेंड्स थे उनसे भी पैसा लिया, और एज एन एक्ट ऑफ चैरिटी उन्होंने उसको देने का डिसाइड किया, किसको, लैंचो को देने का डिसाइड किया. बट अपने इतने कहना चाहिए इम्पॉसिबल एफर्ट्स के बाद में भी जो हमारे पोस्ट मास्टर हैं वो 70 पीस से ज्यादा इकट्ठे नहीं कर सके. अब देखिए क्या हुआ. इट वाज इम्पॉसिबल हिम टू gather the 100 pieces, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope and addressed to the Lencho, and with it letter containing only a single word as a signature. और लेटर में उन्होंने केवल लिखा गॉड, और कुछ नहीं लिखा. 7 उन्होंने 70 पीसेस रखे और एक लेटर डाला उसके अंदर, लेटर में कुछ नहीं लिखा, ओनली गॉड. तो अब यहाँ पर 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास. Who or what did Lencho have faith in? What did he do? Or who read the letter? And what did the postmaster do then? I think you are now able to write down your answers. Student, listen it very carefully. I can tell you the secret of getting good marks. If your grammar is absolutely right, you are not occurring any kind of mistakes over there. There is no rectification in your answers on the basis of the ground of the grammar, and as well as your expressions are clear and concrete. Whatever the question have been asked by the question paper, by the examiner, or in the question paper, then definitely you will get 80 on 80. Now we come to the next. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of
a man who has performed a good deed looked on from his office. अब क्या हुआ, नेक्स्ट फॉलोइंग संडे फिर हमारे लेंचो साहब आ गए और लेंचो साहब ने क्या किया, वहां से लेटर लिया, उनके देखा उन्होंने कि लेटर आया है कि नहीं। ऑल तो देखिए हम जानते हैं हम गॉड को लेटर लिख रहे हैं, हम लोगों को इतनी सेंस हम जानते हैं उसका जवाब नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सिंपलिसिटी थी, चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी जो उसको क्या कर रही थी, अनशेकेबल फेथ था जो उसको नेक्स्ट संडे कहां ले आई, नेक्स्ट संडे उसको पोस्ट ऑफिस पर ले आई और उसने पोस्ट ऑफिस पर जाकर क्या मांगा, उसने पोस्ट ऑफिस पर जाकर अपने लेटर को मांगा, अपने आंसर को मांगा और आंसर उसको मिल गया, यानी उसको एनवलप मिल गया या उसको मनी ऑर्डर मिल गया। देन क्या हुआ देखिए, अब जो हमारे पोस्ट मास्टर थे वो उस एक्सपीरियंस को कहना चाहिए, उस अनुभव को, उस पल को अनुभव करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि उस व्यक्ति के चेहरे पर कैसी मुस्कुराहट आती है उन पैसों को देखकर। सो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, or could he have denied Lencho what he had requested? उसे पता था ईश्वर उसकी बात का बिल्कुल जैसे वो चाहता है ऐसे ही आंसर देंगे, लेकिन जैसे ही उसने पैसे गिनने शुरू किए तो पैसे उसको कम निकले, तो वो बड़ा गुस्सा हो गया और उसने क्या किया, इमीडिएटली लेंचो went to the window to ask for paper and ink. उसने पेपर लिया, इंक लिया, काउंटर पर जाकर और लिखना शुरू किया पब्लिक राइटिंग टेबल पर। He started to write with much wrinkling of his brow, यानी अपनी ब्रो को, ऐसे ब्रो को उसने क्या किया, वहां पर उसके wrinkles आ गए और लिखना शुरू किया, caused by the efforts he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of the fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it, said, God of the money that I asked for only 70 pesos, raised me, send me the rest since I need it very much, but I don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. And then उसने क्या लिखा, सर मैंने तो आपसे 100 pesos मांगे थे और मेरे पास आए केवल 70 pesos, तो सर मैं ये चाहता हूँ आप मेरे बचे हुए pesos भी मुझे दे दीजिए और ये आप इस पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजिएगा बल्कि ये पैसे आप मुझे पर्सनली दीजिएगा, क्योंकि इस पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, these are a bunch of crooks, यानी ये सब सारे दुष्ट लोग हैं, ये दुष्ट लोगों का ग्रुप है, तो आप वहां से मत दीजिएगा। और इन द एंड ही रोट लेंचो, और अंत में उसने लिखा लेंचो, यानी कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक सिंपल पर्सन जिसका नाम लेंचो है, जो एक फीजेंट है, उसकी चाइल्ड लाइक सिंपलिसिटी, उसका अनशेकेबल फेथ उसको गॉड में बिलीव कराता है और गॉड उसकी, क्योंकि गॉड कभी नहीं आते हैं, बट the God always helps the people in form of like the postmaster, post office employees and the dear and near one, those who are always ready to help and support to each and everyone. Because right now we are living in the time of COVID-19, we are also find there are so many supportable hand in our society, those who are helping to each other, like in form of doctors, like in form of nurses, like in form of the sweepers and so many other people, those who are providing daily supplement to the other people. That's why these are the part of divinity, these are the part, the messengers of the God, these are the angels for the society of God. So that's all, this is the end of the chapter. Just read all these questions and you will get the answers. This has been completed. Students. If you have any problem you can discuss with me, and I think bye bye, this is the time to say bye bye. So take care everyone and be safe